Okay, so screen visible है? जी Okay, so hello and welcome to this introduction to Flask session. This is going to be a first class-based session, and we are going to be covering a lot of basics involved in Flask and Flask-based systems. So, and at the same time, we will be comparing Flask with uh, the another quite popular Python-based web framework, which is Django. So let's begin. First of all, Flask is classified as a Python-based micro framework, and it was first released back in 2010. Its first actually stable release came out in 2010, and since then it has become quite popular in the technological world. It is a quite very easy to use and lightweight and a minimalist web framework. Actually, it's a micro framework, which means that it does not have any set of particular uh, tools or external libraries directly embedded into its structure. So, which means that there are fewer batteries, which means that developer has to write down most of the code himself, and which means that in turn it means that the customization of the framework is quite easier in Flask. Let's compare it with Django, where Django is a similar kind of Python-based free open source web framework, and it was first released back in 2005, and it mainly follows the MVC architectural pattern, which composes of model, view, and a controller, where the model is the one interacting with the database, and view is the one actually connecting the database to the front end, and controller is the one which is actually controlling the requests from the front end. Django was developed based on the batteries included approach, which means that it contains built-in authentication, URL routing, database schema migration, and there is also a built-in ORM system included within the Django system. Uh, More built-ins mean that the developer has to code himself quite lesser as compared with Flask, because there are a lot of built-in functionalities that the developer can just inherit from, and the code writing actually minimizes in Django. Moving on, let's cover the database support from in Flask. Flask does not have any built-in ORM system in itself, so to perform database operations, the developer has to use ORM systems or SQL toolkits. The most popular one is SQLAlchemy. And the databases supported in Flask are MySQL, Oracle, SQLite, Postgres, and many other databases. On the other hand, Django has a built-in robust ORM system, which allows the developers to perform the common database operations without having to write SQL queries. They can just replicate those queries with the ORM commands, and the life is quite easier when the developer has to interact with the database system. Similar to Flask, it supports MySQL, Oracle, SQLite, and Postgres, which are the most common databases used with Django, and a lot of other database operations are also supported in Django. Moving on, the most common question when we are considering Python-based frameworks is why Flask, and why is Flask preferred over other frameworks such as Django or any other one. So Flask mostly is a great fit when there is a lot of experimentation involved, which is most commonly at the start of any startup, and when the developers are looking to use um, newer technologies, and they're looking to utilize the microservices framework into their system, into their backend system. That's when Flask comes into play,
And when there are multitude of small disparate features and there are simple use cases, then Flask is quite easy to build from go from ground up to a working state. It is also very suitable for technical experimentation, and the flexibility of customization is quite higher than Django in Flask. So these are a few of the reasons why Flask is sometimes preferred over Django. And on the other hand, Django is also suitable in some cases which involve the cases where the developers need to build an MVP in a quick time. So they want to go to the market quite quickly, then they will prefer Django because if there is front end involved, then with Django you can add the front end quite quickly to get an MVP working and get feedback on it to actually um, see how the market is responding to their product or their idea. So this means that the Django is effectively positioned as a start fast solution, giving you the ability to launch quickly and grow moderately later on. So Flask actually has this ability to launch to the market quickly, and then grow later on according to the changing requirements. Apart from that, it has higher scalability for more complex solutions, and there is a standardized tech stack. There is a vast online community which is supporting the Django framework, and which actually comes into play when there are new developers developing a new product. So, and it apart from that, there is a huge library support, which third-party libraries, which actually make lives easier for the developers to ensure that they can deliver the MVP um, in a lesser time. The last point is that it has a better security system than Flask-based system. Flask-based systems have to, write all the authentication themselves. They have to write all the cross-origin scripts themselves. But Django, on the other hand, provides all these security features as a built-in. I think I don't agree with this thing कि फ्लास्क के अंदर सारी चीजें आपको खुद से करनी पड़ती हैं. So There are I think most of the things which Django in terms of security Django provides as a built-in. In Flask, you have to sort of integrate a security extension or write yes, authentication yourself. that's the key. That's the key thing of Flask. Um, if मेरे पास एक एक्चुअली मैंने मेरा जो प्रोमो केस था लीड सॉफ्टवेयर इंजीनियर का, उसमें मैंने फ्लास्क को काफी अच्छी तरीके से पैनल को प्रेजेंट किया था. सो आई हैव अ डायग्राम जो इफ यू गाइस डोंट माइंड तो मैं जस्ट 2-3 मिनट के लिए अगर वो डायग्राम शेयर कर दूं, आई थिंक वो ज्यादा अच्छा वो कॉन्टेक्स्ट है. इफ और अदरवाइज हम एंड में भी आ सकते हैं उसके ऊपर व्हाटएवर I इज think सूटेबल. yeah, this is the last slide for Yeah, Django versus Flask comparison. So I think at this point we can discuss that. yeah. Okay, if you can give me the screen share, I will just quickly go. Okay. So the last one is that some of the prominent companies which are using Flask and Django, Flask, they include Pinterest. LinkedIn and Pinterest. And in terms of Django, there is Instagram, Mozilla, Nextdoor, and Bitbucket, which are using these two common frameworks. Okay, moving on. Let me stop sharing, and I think Motasim can share the screen now. Yeah, thanks. So here it is. So the idea with Flask is कि Flask जो है ना, जैसा कि हर कोई कहता है कि एक मिनिमलिस्ट फ्रेमवर्क है. और मिनिमलिस्ट फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि अगर मैं ये कुछ चीज़ें देता है. ये आपको रिक्वेस्ट की लाइफ साइकिल देता है, यानी कि ये इसके एक रिक्वेस्ट लिसनर लगाया हुआ होता है जो कि आपकी कोई भी रिक्वेस्ट आती है. ये आपको राउटिंग्स देता है और कोई एक चीज़ और देता है, या जिंजर टेम्पलेट्स देता है. 3 चीज़ें देता है जो कि बिल्कुल ही मिनिमलिस्ट चीज़ होती है. इससे ज़्यादा फ्लास्क आपको बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं देता. व्हाट यू कैन डू इज कि आप फ्लास्क को एक्सटेंड कर सकते हैं. यानी बाय डिफॉल्ट उसका राउटर, बाय डिफॉल्ट उसका जो वेब सर्वर होता है,
जो वेब सर्विस लिसन कर रहा होता है, बाय डिफॉल्ट जो उसकी टेम्पलेटिंग होती है जिंजर से, चाहे तो आप इसको यूज करना, चाहे तो आप इसको ना यूज करना, चाहे तो आप इसको किसी और चीज से रिप्लेस कर लें। फ्लास्क की कम्युनिटी क्या करती है कि वो एक्सटेंशंस जो फ्लास्क, बहुत सारे एक्सटेंशन ऐसे हैं जो फ्लास्क ने खुद बनाए हैं, और बहुत सारे एक्सटेंशन ऐसे हैं जो कोई और बनाता है, थर्ड पार्टी बनाती है, लेकिन फ्लास्क की जो काइंड ऑफ आप कह रहे हैं डेवलपर्स हैं या जो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन है वो इन्वॉल्व होती है। तो इनकी अपनी स्पेसिफिकेशंस हैं और वो चीज़ें, और वो मॉनिटर कर रहे होते हैं कि फ्लास्क की जितनी भी एक्सटेंशंस आ रही हैं वो फ्लास्क से कितनी कॉम्पेटेबल है कितनी नहीं है। फ्लास्क के डेवलपर्स की उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है। सो अगर फ्लास्क बाय डिफॉल्ट जैसे ऑथेंटिकेशन नहीं देती, लेकिन फ्लास्क एक एक्सटेंशन है HTTP ऑथ, अगर आप HTTP ऑथ को इंटीग्रेट कर लेते हैं अपने फ्लास्क के साथ, जो कि इजीली इंटीग्रेट हो जाता है, यानी आप सेटिंग्स डॉट पाई फाइल में इस तरह के उसमें जा करके लाइक हार्डली एक एक दो लाइंस लिखनी होती हैं आपने, मतलब कोई हार्डली बहुत एक दो लंबा लाइंस काम नहीं लिखनी करना। होती हैं, तो फिर जो चीज बनती है ना फ्रेमवर्क, उसको फ्लास्क वाले कहते हैं कि ये एक्सटेंडेड फ्लास्क है। तो यहाँ पे अगर इस डायग्राम के में आप देखें तो एक कोर फ्लास्क है, यानी जिसके अंदर सिर्फ 3 चीजें आती हैं, राउटिंग, वेब सर्वर और जिंजर टेम्पलेट। आप उसको फ्लास्क एक्सटेंशन के साथ इंटीग्रेट करते जाएं और आप अपनी मर्जी की फ्लास्क एक्सटेंडेड बना सकते हैं। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आपके पास डेटाबेस नहीं है, तो आप ORM को की एक्सटेंशन को इंटीग्रेट ना करें। तो फ्लास्क का मेन पॉइंट यही था कि एज लाइट एज पॉसिबल था, ऑप्टिमाइज था बहुत ज़्यादा, और इसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत फास्ट था। यानी ये API बेंचमार्किंग जो होती है, API बेंचमार्किंग में मुझे याद है जब मैंने स्टार्ट देखा तो 600 टाइम्स या पता नहीं कितना टाइम्स ये बीट कर रहा था अपने अदर कॉम्पिटिटर्स को। तो अब जैसे इसके अंदर सीरियलाइजर अगर नहीं है, तो आपने मार्च में सीरियलाइजर इसके अंदर एक्सटेंड कर लिया, रियली सिंपल, 2-3 लाइन्स ऑफ कोड आप एक्सटेंड करते हैं फ्लास्क को अपनी मर्जी के मुताबिक, और आपके पास एक्सटेंडेड फ्लास्क आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आ जाएगा। सो दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट जो जैंगो के अंदर नहीं है। थैंक्स फॉर द अपॉर्चुनिटी। सही है, जबरदस्त। I think we can go ahead and start, go hands on with this. Let's start a simple, very simple Flask application without any extensions or anything, and let's see how easy it is to start that. Okay, I'm gonna share my screen. So here we are. Let me just actually go ahead and share my whole screen. Okay, let's start a virtual environment. Okay, so currently I don't have anything like in this repository. This just an empty repository that we've created for this session. So currently we only have the readme file here. So मैं इस पे switch करता हूँ इस code पे। अच्छा, तो इस पे we just need to create like a simple Flask application, और एक view endpoint हम लोग create करेंगे इसमें, kind of hello world view and endpoint। सही है? तो uh, this code। अच्छा, let's create a new file and we call app.py. This will be the main Flask application, and for this app.py we'll just create a simple Flask app here. Give me a second. So there we go. Yeah. अच्छा, हम Flask को इंस्टॉल भी कर लेते हैं। मैं अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट में एक सेकेंड, it's just gonna ppnv install Flask। अभी टर्मिनल की स्क्रीन नहीं नजर आ रही। अच्छा, या ऐसे करते हैं एक सेकेंड। VS कोड का टर्मिनल खोल लेना आप। हाँ, मैं करता हूँ एक सेकेंड।
मैक्सिमाइज करते हैं और सेट न्यू टर्मिनल। अच्छा, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं पहले। ठीक है, अच्छा इसमें इंस्टॉल कर लेते हैं फ्लास्क। ठीक है, अच्छा हमारे पास एक पिक फाइल हमें मिल गया जिसमें फ्लास्क पड़ी हुई है। इसने एक लॉग फाइल बना दी है टू मेक श्योर दैट द राइट वर्जन ऑफ फ्लास्क इज इंस्टॉल्ड। अच्छा, हमारे पास app.py है जिसके अंदर एक बेसिक फ्लास्क एप्लीकेशन ये क्रिएट कर रही है। हम लोग एक व्यू बना लेते हैं, व्यू फाइल जिसके अंदर हमारे व्यूज़ पड़े होंगे। ठीक है, और बिल्कुल एक सिंपल सा व्यू मैं इसमें रखवा देता हूँ। जस्ट डू दिस। सही है। तो all that we are saying here is on the root path we are exposing an API endpoint to simple hello world HTML रिटर्न कर रहा है। सही है। और इसमें मैं ये कर देता हूँ कि मैं इसमें कहता हूँ अगर हम इसको डायरेक्टली एग्जीक्यूट करें इस फाइल को, आई वांट द एप्लीकेशन टू स्टार्ट। सही है। सो just to review this, we have a basic Flask application, a view file that is inheriting this, that is importing this app.py, and it's just registering a it's a very simple endpoint. So yeah, okay, let's start this. Okay, just hold on a second. Oh, sorry. underscore main. अच्छा, हमारे if I get this again, एक सेकेंड। Underscore name is equal to main, right? No? सॉरी। फाइल नहीं होता नेम। Okay, we have a server running on port 5000. Let's in the new tab. Uh, hit this. तो हमारे पास एक बेसिक हेलो वर्ल्ड के ये मतलब ये API एंड पॉइंट हिट हुआ है और इसने एक बेसिक ये HTML रिटर्न कर दिया। सही है। तो ये एक बिल्कुल एक बेसिक सी फ्लास्क एप्लीकेशन थी। Any questions about this or anything that anyone wants to add here? आवाज आ रही है मेरी सबको? जी आ रही है आवाज। सारे इतनी कोई चीज? खामोशी से बोल रहे हैं कि बैठे हुए हैं कि पता नहीं चल रहा। अच्छा, मैं इसको पुश कर रहा हूँ। इसके बाद आई थिंक हम डेटाबेस सेटअप कर रहे होंगे। इज इट राइट रजी? I think folder structure वगैरह थोड़ा सा हाँ हाँ, print ओके करना था। ठीक है। बिलाल भी ओवर टू यू।
So, can you guys see my screen? Yes. Yeah. Discuss में आया था। हाँ। अच्छा यार, इसका जो बेसिकली फोल्डर स्ट्रक्चर है ना, ऐसे जिस तरह अभी मुस्तसिम भी बता रहे थे कि बिल्कुल मिनिमलिस्टिक स्ट्रक्चर से चलता है ये, और इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स कोई भी नहीं है। इसमें सिर्फ बेस्ट प्रैक्टिसेस ही हैं जो आपने अपने हिसाब से फॉलो करनी होती हैं। आप अपनी टीम के साथ अगर इंडिविजुअली काम कर रहे हैं तो आप अपने लिए डिफाइन करते हैं और उनको यूज करते हैं। हाँ, इसमें कुछ 2-3 फोल्डर्स हैं जो कि पेट वो फ्लास्क एक्सपेक्ट कर रहा होता है कि ये बनेंगे, वो हम देख लेते हैं। इसमें नॉर्मली जो ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस चल रही होती है ना, उसमें ये होता है कि आप एक सबसे पहले तो अपना एक फोल्डर क्रिएट करते हैं ऐप के नाम से, या जो भी आपने नाम रखना है। ऐप कई दफ़ा कंफ्यूज भी कर देता है नाम, क्योंकि आप जो मेन वेरिएबल रख रहे होते हैं फ्लास्क का, वो भी ऐप होता है। डिपेंड करता है आप किस तरह का कोड कर रहे हैं। मैं नॉर्मली ऐप ही रखा होता है, और आपकी जो ये सारी फाइल्स वगैरह है ना, वो इसके अंदर पड़ी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह ये मैंने मूव कर दिया, और बेसिकली VS कोड ने उसके जो है ना खुद ही इंपोर्ट्स सारे अपडेट कर दिए। एक तो सबसे पहले ये एक मेन फोल्डर आ गया। इसके अलावा जो आपके पास एक सबसे ज़्यादा, इसके ज़्यादा क्रिएट करते हैं, टेम्पलेट्स के नाम से फोल्डर होता है जो कि नॉर्मली इसको एक्सपेक्ट कर रहा होता है फ्लास्क, और बाकी ये 2 मेन फोल्डर होते हैं। और इसके अलावा एक स्टैटिक फोल्डर होता है इसका। स्टैटिक फोल्डर का बेसिकली मकसद क्या होता है कि इसमें जितना भी अगर आपने फ्रंट एंड इम्प्लीमेंट करना है अदर देन APIs, उसके अंदर आपने कोई जावास्क्रिप्ट का कोड होस्ट करना है, आपने CSS होस्ट करनी है या इमेजेस होस्ट करने हैं, तो वो आप स्टैटिक के नाम से एक फोल्डर अपना बना लेते हैं। क्योंकि अभी मेरे पास ये है नहीं तो ये कमिट भी नहीं होगा। ये सिंपल इसका जो है ना मेन बेसिक स्ट्रक्चर है। बाकी जो मेरी अपनी रिकमेंडेशन है, मैं नॉर्मली ज़्यादातर जो है MVC आर्किटेक्चर को ही फॉलो कर रहा होता हूँ। तो इसमें मैं अपना जो कोड है वो डिवाइड कर लेता हूँ मॉडल्स, व्यूज और कंट्रोलर्स में। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि नॉर्मली ऐप के फोल्डर के अंदर जो है ना सब फोल्डर सारे बना लेते हैं, जिसमें नाम से ही वो एविडेंट होते हैं। कंट्रोलर्स बड़े होते हैं, उसके अलावा जो है आपके पास मॉडल्स होते हैं। और व्यूज का मैं इटसेल्फ फोल्डर इसलिए नहीं बनाता क्योंकि टेम्पलेट्स में ऑलरेडी वो सारे उधर व्यूज हैंडल हो रहे होते हैं हमारे पास। तो इसलिए मॉडल्स और कंट्रोलर्स के नाम से फंक्शन बना ले, वो फोल्डर्स बना के, तो जितने भी मेरे मॉडल्स होंगे, डेटाबेस से इंटरेक्शन होगी, वो सारे के सारे मॉडल्स के फोल्डर में फाइल्स अवेलेबल होंगी। और इसी तरह एक जो मेरे बेसिकली कंट्रोलर्स होंगे, वो सारे के सारे कंट्रोलर के फंक्शन में होंगे। तो अच्छा, और टेम्पलेट्स में दूसरी, तो हम सिर्फ HTML फाइल्स ही रखते हैं, या फिर टेम्पलेट्स में हम्म, हम जो अपनी व्यू फाइल्स हैं, जैसे हाँ, ये व्यूज ये होती हैं, व्यू व्यूज डॉट होते हैं व्यू ना है। बेसिकली। हाँ जी, अच्छा, वो ठीक है। यही बात है ना, क्योंकि व्यूज में किसी किस्म की लॉजिक नहीं होनी चाहिए। और टेम्पलेट्स भी हमारे सारे के सारे जो है वो व्यूज ही होते हैं। आपने अपने स्टैंडर्ड सेट करने हैं ना। अगर आपको कुछ स्पेसिफिकली कोई ऐसी लॉजिक चाहिए जो आपने व्यू में डालनी है तो आप देख लें, लेकिन नॉर्मली जो MVC का पैटर्न है वो हाईली डिस्करेज करता है कि आपके व्यूज के अंदर कोई ऐसी लॉजिक पड़ी हो जो आप लिख रहे हो। व्यूज सिंपल जो है आपकी UI बिल्ड कर रहे होंगे। सही है। अच्छा, दूसरा जो एक और चीज मैं नॉर्मली फॉलो करता होता हूँ, मैं इस तरह जो है ना ये डेकोरेटर नहीं यूज करता राउट डिफाइन करने के लिए। इसमें सिंपल एक जो है ना वो कह लें कि मेरी एक अपनी मेथोडोलॉजी है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि आप जब कोड लिखते हैं कुछ अर्से बाद आप भूल जाते हैं कि आपने किधर क्या लिखा था। अब मैंने ट्रैक बैक करना है एक API को,
एपीआई को मैं उसका एंड पॉइंट ढूंढता रहूंगा पूरे कोड बेस में, कल को ये ज्यादा हो जाएगा। उसके लिए मैं नॉर्मली क्या करता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ये ऐड रूल का फंक्शन यूज करता होता हूँ। ठीक है, ऐप डॉट ऐड रूल, और ये सारे रूल्स जो है ना मेरे एक जगह पे इकट्ठे होते रहते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है ना ये एक कैटलॉग का ब्लूप्रिंट है। ब्लूप्रिंट्स हम नेक्स्ट बाद में कवर करेंगे। तो इसके अंदर जितने राउट्स डिफाइन हो रहे हैं ना, वो एक जगह पे ही डिफाइन हो रहे हैं। वो आगे किस फंक्शन को पॉइंट कर रहे हैं वो यहाँ पे डिफाइन हो जाएंगे। मुझे कल को देखना है कि कैटलॉग की लिस्ट की एपीआई किधर जा रही है, तो मैं सिंपली जो है ना इस एक फाइल में आऊँगा, इसके अंदर मैं जो है हिट करके तो देख सकता हूँ कि मेरी एपीआई किधर पड़ी हुई है, कहाँ पे क्या कोड चल रहा है। ठीक है, तो ये एक बस कह लें कि पॉइंटर है। नॉर्मली जो है आपको जितने ट्यूटोरियल्स वगैरह मिलते हैं उसके अंदर सारे जो राउट्स हैं वो ऐप डॉट राउट करके, इसी तरह ही डेकोरेटर यूज करके तो राउट्स डिफाइन कर रहे होते हैं, और अक्सर फ्लास्क में इसी तरह ही कर रहे होते हैं। लेकिन अपनी आसानी के लिए एक जस्ट स्टेप है कि आप अपने सारे राउट्स एक फाइल के अंदर डिफाइन करें, ताकि कल को आपको जो है ना अपना कोड मैनेज करने में आसानी हो। इट्स ऑल अबाउट मैनेजेबिलिटी, कि आपने अपनी चीज़ें मैनेज किस तरह करनी है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस कुछ नहीं है, इसीलिए इसको जो है ना एक मिनिमलिस्टिक आर्किटेक्चर कहा जाता है, फ्रेमवर्क कहा जाता है फ्लास्क को। बस ये इसका एक छोटा सा। बाकी नेक्स्ट ओवर टू रिजवान, आई गेस, या रजी। Razi, I think. हाँ, Yes. Okay, let me share my screen. All right, so we are moving on to the database connectivity in Flask. So Flask supports a lot of different databases, but for the sake of this session, we are only using SQLAlchemy, which is a built-in or the most easiest database to connect with. So we have a schema.sql file here, and which contains basically the SQL for creating a table of books, which has an ID, which is a primary key, and which is a title, a content, and which has a created column, which is actually a timestamp. So this is like one of the methods to actually create a database table in Flask. So for this, first of all, we are going to create a connection using the SQLite library, which is going to connect with a database file named as database.db. So this will actually create a database file, which will actually create a database pointer within the same directory that we are executing this script. So first, and then it will actually read, open the schema.sql file and execute the script onto the database. And then we'll get a cursor of the connection, of the database connection. And then we'll go ahead and add two rows into the created table of books. And then we'll commit the connection and close it. So this is one of the um, one of the ways to actually create a database structure in Flask, and which actually depends on SQL queries and SQL predefined schema. So this is one of the methods, and another method is to actually use a model uh, to use a model and use an SQLAlchemy to actually create that model and reflect a database table for that model in the database. So this code starting from this app line is actually covering the second method of using a model, and an ORM, underlying ORM,
to create that model into the database. So let's go ahead and execute the script. So we have created a script called initDB, and this will actually initialize our DB connection and create an SQLite DB within the same directory. So let's go ahead and initialize that DB. So when I write this script, when I execute the script, what it will do, it will create a connection of with a database, the SQLite database file called database.db, and create these two tables in it. One of the table which will be books, which will be created using the raw SQL queries, and the second one will be created with the use of the Razi, models. Just one question. Schema.sql. Yeah. Is it a file that you are creating on the runtime? No, not on the runtime. This is actually a predefined schema. Predefined schema which contains one of the tables that we are going to create. सही है. Okay. So when we run this script, it shows a warning but we are just going to ignore it. So what this script does is create a database.db file within the same directory, and as you can see, it is not readable over here. So what we'll do is we'll go ahead and open the SQLite browser, and we'll try to open the database in this software. So once we open it, we open the database, we see that a table of books has been created with the following columns in it. And this SQLite sequence is the default table, which is created by SQLite itself. And then we have the third table, which is our user table, which was actually reflecting using the model that we created over here. So these are one of the one of the many ways to actually create a database model and in Flask. And if we like to see, let's go browse data. So here we can see that we have the two rows that we actually created using the SQL queries over here. So this table structure was actually created using the schema.sql file, and the other table, as you can see, the user table was actually created by the model mechanism. And we can just go ahead and create a few users as well in this using the ORM. But for the sake of this session, we're not going to cover it. Most probably, Rizwan is going to cover that. So if there are any questions regarding what we did in this part, you're more than welcome to ask it. So I think one of the things that I just missed was this engine. So what we do is we define an SQLAlchemy database URI, which actually is a string starting from SQLite, and there are three slashes before the database file name, which actually what it does is it is actually a sort of a code word for saying that we are expecting this database.db file or this connection to be within the same directory, within the same local directory as as where the script resides. So if we यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा, जी, आई थिंक बिलाल भाई भी उनके लिए भी रेलेवेंट है. जब हमारी कॉन्फ़िगरेशन है, लाइक जेंगो में हमारे पास सेटिंग्स होती हैं, वो हम एक सेपरेट एक सेटिंग्स फाइल में यूजुअली रखते हैं, सही है. लेकिन फ्लास्क में हम इसमें क्या कन्वेंशन है, हम सेटिंग्स या एनवायरनमेंट वेरिएबल्स वगैरह वो चीजें नॉर्मली ये इसी तरह ही खुली छोड़ देता है, सीधी सी बात. अगर मैं इसको मोस्ट ऑफ द टाइम, हाँ जी, लेकिन नॉर्मली क्या मैं प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ कि मैं इसकी जो है ना .env के एक्सटेंशन है फ्लास्क की, मैं एक env फाइल मेंटेन करता हूँ अपने पास, और मैं वो .env की फाइल वो एक्सटेंशन यूज करके जो है ना एट द स्टार्ट ऑफ एप्लीकेशन वो सेटिंग सारी इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने पास. तो मेरे पास वो इंपोर्ट आप कहाँ पे करते हैं, किस की फाइल आपने रखी होती है? लाइक जेंगो के केस में भी ऐसे ही होता है, हम .env ही फाइल ही रखते हैं, लेकिन हम उसको सेटिंग्स फाइल में इंपोर्ट करके उसको पार्स कर लेते हैं. ठीक है. तो इसमें आपके पास आपने अपना कोड का स्ट्रक्चर देखना है. नॉर्मली आपने किस तरह रखा, नॉर्मली आप जो अपनी
जहाँ पे ऐप का वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं ना जिस फाइल के अंदर, मैं नॉर्मली वो अंडरस्कोर इनिट फाइल में ही डिफाइन कर रहा होता हूँ, जो कि मेरा मेन कोड का जो ऐप सही फोल्डर है, जिस तरह मैंने अभी एक ऐप फोल्डर बनाया था, उसके अंदर मैं एक अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर डॉट पाई फाइल बना दूंगा, जो कि उसको एज अ मॉड्यूल इनिशियलाइज करेगी, और उसके अंदर मैं ये अपनी सेटिंग्स इंपोर्ट कर लूंगा, और उसके अलावा मैं फ्लास्क की बेसिक जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं वो सेटअप करके तो फ्लास्क उधर सेटअप कर लूंगा। बट ठीक है। बट आई थिंक फरहान हैज अ पॉइंट, भाई लाइक अगर ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन है तो आई थिंक कॉन्फ़िग की फाइल या सेटिंग्स की फाइल हमें रख के वहां हाँ पे जैसे आपने वो मतलब ऐसे ऐसे ही है, मैं उसके अंदर सिर्फ उसको इंपोर्ट करा रहा हूँ, सेटिंग्स मेरी सारी की सारी env फाइल में पड़ी होंगी। बट आई थिंक स्टिल लाइक सेटिंग्स फाइल तो होनी चाहिए ना जहाँ पे आप env फाइल को रीड कर रहे हो, मे बी। यस, तो एक और कन्वेंशन इस हाँ तरह से वो होती है कि ऐसे ही है। असल में बात यह है कि सिर्फ सेटिंग्स फाइल जो env फाइल है उसको पार्स करने के अलावा हम कभी कभार डिफॉल्ट्स भी सेट कर रहे होते हैं ना, यस, मतलब env फाइल से इन्वायरमेंट वेरिएबल ये उठाएं, और अगर नहीं मिलता तो उसमें ये डिफॉल्ट होना चाहिए। और कभी कभार ऐसा होता है कि कोई सेटिंग ऐसी होती है जो हम इन्वायरमेंट से नहीं उठा रहे होते, वो हम लोग सेटिंग में वो हमें कॉन्फ़िगरेशन कोड में ही रखना चाह रहे होते हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ ना कि वो आप टोटली जो है ना आपके सिनेरियो के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसीलिए इसने फ्लास्क ने इटसेल्फ अपना कोई अलग से जो है ना आउट ऑफ द बॉक्स कुछ नहीं दिया, वो आपको जो है ना चीजें अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट करनी होती है। उसमें यही है कि आपके पास अगर रिक्वायरमेंट्स जिस तरह की है उस हिसाब से आप इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। नॉर्मली मैनेज करने के लिए आप, अगर आपकी थोड़ी सी सेटिंग्स हैं तो आप उसी के अंदर इंपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर आपकी एक्सटेंसिव सेटिंग्स हैं और आप जो है थोड़ा सा चीज़ें कम्प्लेक्स है, तो आप जो है अलग से एक फाइल सेटिंग्स डॉट पाई बना लें, और उसके अंदर ये सारा करके तो वो सेटिंग्स डॉट पाई अपने जो है आप इनिट फाइल के अंदर इंपोर्ट कर लें, और जब इंपोर्ट करेंगे तो आपकी सेटिंग्स इंपोर्ट हो जाएंगी। सही है। so are there any questions regarding this database setup? If not, then we can move on to the next part, which will be covered by Rizwan. अच्छा रजी, एक क्वेश्चन मेरा है यहाँ पे। जी, यहाँ पे तो ये मतलब काफी मतलब एक रॉ सा हमने कोड यहाँ पे लिखा हुआ है ना, लेकिन जब yeah, एक्चुअली हम एक लाइक प्रोडक्शन एप्लीकेशन में हम लोग जब ये कोड लिखते हैं, yes. तो क्या ये कोड ये वाला सारा कोड एक फाइल में जाता है यूजली, मतलब एक लाइक हम मॉडल्स डॉट पी वाई फाइल बना देते हैं, उसके अंदर ये सारा ये जो एप्स लेके लेट से मैं यूज कर रहा हूँ एसक्यूएल Yes. सही है। हाँ तो सॉरी यहाँ डीबी से लेके नीचे जो और जितनी मॉडल्स की डेफिनेशन है और एंड पे उनकी क्रिएशन है और ये जो हम कमिट कर रहे हैं, ये सारा एक Mhm. फाइल में जाता है यूजली। So नॉर्मली मैं क्या प्रैक्टिस फॉलो करता हूँ, वो मैं ये करता हूँ, मैं ये वैसे थोड़ी सी रजी वाली अप्रोच से मुझे थोड़ा सा इतराज ही रहता है कि जिसके अंदर आप रॉ क्यूरीज एग्जीक्यूट कर रहे हैं और उसके बाद आप अपनी डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं। मैं हमेशा जो है ना फ्लास्क के एसक्यूएल एल्केमी और फ्लास्क माइग्रेट के जो है मॉड्यूल्स यूज करता हूँ। उसमें आपके पास कंट्रोल ये रहता है कि आप क्या करते हैं, जिस तरह मैंने अभी मॉडल्स का फोल्डर बिल्ड किया था ना अपने टर्न में, मैंने जितने भी मॉडल्स हैं ना वो सारे उस फोल्डर के अंदर लाइक आ रहे होते हैं। मैं एक फाइल के अंदर ज्यादा मॉडल्स नहीं डिफाइन करता, वन फाइल पर मॉडल रखता हूँ। फॉर एग्जांपल यूजर का मॉडल है तो यूजर डॉट पाई एक फाइल बनाऊंगा मॉडल्स के फोल्डर में, और उसके अंदर यूजर का जो है मॉडल की क्लास होगी, और वो सारी की सारी जो है ना इटसेल्फ जो है इंपोर्ट हो रही होंगी मेरी जो है इनिट फाइल है उसके अंदर। और मैं उसके बाद फ्लास्क माइग्रेट की कमांड यूज करके जो है ना अपनी डेटाबेस सेटअप भी कर रहा हूँ। इसके अलावा मेरे अगर कभी मॉडल में कोई चेंज आता है तो मैं उसके अंदर उधर ही माइग्रेशन बिल्ड करके तो अपनी माइग्रेशंस रन कर रहा हूँ। मतलब वो जेंगो वाली अप्रोच मतलब जी करते हैं यूजली। जी, वो क्योंकि उससे ना आपको आसानी ये रहती है कि आपकी चीज़ें काफ़ी मैनेज रहती हैं, आपको बिल्कुल। जो है ना इधर उधर को घूमते नहीं हो, जब माइग्रेशन में ये बैक स्पेशली एंड जब आप फोर्थ जा टीम के सकते हैं अंदर आप काम करें। माइग्रेट, हाँ। हाँ, लेकिन आप सही इसमें है। अपग्रेड कर लें, डाउनग्रेड कर लें, उसमें आपको फिर सारे एक सिंक में रहते हैं।
लेकिन बिलाल भाई इसमें आपकी अप्रोच में थोड़ा सा ये है कि वो ज्यादा मॉड्यूलर इस तरह से है कि आप मॉडल्स का फोल्डर बना के उसके अंदर यूजर लेफ्ट से यूजर का आप फिर एक फाइल बनाते हैं ना, पीवाई फाइल, और उसमें फिर जी जी यूजर का मॉडल रखते हैं। तो अगर जी। लेट्स से हमारे पास 8-10 ही मॉडल हैं, तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा फिर मॉडुलर नहीं हो जाएगा, रादर देन क्रिएटिंग सेपरेट फाइल फॉर ईच मॉडल, वी शुड गो फॉर अ models.py फाइल, यानी कि हम फोल्डर ना बनाए। तो आई थिंक ये अगेन वही वाली बात है कि हाँ, अप टू योर यूज। ये असल में इसमें ना फ्लास्क कितना फ्लेक्सिबल है, वो हाँ, कहता है जैसे कर रहे हैं कर लो। कर लो। हाँ, तो ये वो चीजें हैं कि जो हम अपनी रिक्वायरमेंट की बेस पे भी डिसाइड कर सकते हैं। यूजुअली models.py की फाइल होती है, बट बिलाल भाई वाली अप्रोच वहां पे बिल्कुल काम आती है, जहाँ पे आपके हाँ बहुत ऐसे ज्यादा ही मॉडल है। है, नॉर्मली यही होता है कि एक मॉडल्स डॉट पाई की फाइल होती है, उसमें मॉडल्स डिफाइन हुए होते हैं। मुझे असल में पर्सनली वो पसंद नहीं है इस तरह, क्योंकि हाँ, मुझे रीडेबिलिटी के भी इशू होते हैं, और फिर सही। चीजें याद कर मैं असल में हमेशा कोड इस पर्सपेक्टिव से कह रहा होता हूँ कि मैंने ये भूल जाना है कोड, बिल्कुल सही है, तो ऐसे बाद में ऐसी कल को मैं अप्रोच होनी दोबारा आऊँ तो चाहिए। मुझे याद हो कि मैंने याद इजीली रिमाइंड कर लिया कि कहाँ पे क्या चीज पड़ी हुई है। सही। तो अगर विजुअली बात ये करें तो कन्वेंशन अच्छी भी होती है, क्योंकि हमें ना शुरू में स्कोप का अंदाजा नहीं होता। तो अगर ये कन्वेंशन शुरू से फॉलो की जाए ना, तो अगर स्कोप बढ़े भी ना, स्केलेबल भी रहती हैं चीजें। मेरे ख्याल से ये अच्छी अप्रोच है कि अलग अलग बनाई जाए फाइल्स। जी, तो लाइक द मोस्ट कह लें कि रिकमेंडेड अप्रोच वो यही है कि हम एक मॉडल्स का फोल्डर बनाएं, और उसमें जो है वो रेलिवेंट जितने भी हमारे उसके अंदर टेबल्स वगैरह बनने जा रहे हैं, उनके लिए एक अलग अलग जो है वो फाइल हो, जिसमें हर एक फाइल में एक ही मॉडल हो, जैसे कि इस प्रोजेक्ट में जो है वो डेमोन्स्ट्रेट किया जा रहा है। इसी के साथ जो है वो एक माइग्रेशंस का फोल्डर भी होता है, जिसके अंदर जो है वो सारी माइग्रेशंस हमारी मेंटेन हो रही होती हैं, विच कीप्स ट्रैक ऑफ ऑल द मॉडल चेंजेस। तो जो अच्छा, ये फ्लास्क जो है माइग्रेशंस का, ये इनको सीरियली नंबर नहीं करती है? ओपन करते हैं जरा माइग्रेशंस वाला। जी, वो सीरियल नंबर नहीं इस होते, ये नहीं नहीं, इसकी सीरियल नंबर होता है इसका, ये इसके बगैर सिंपली वो उसका कैसे वो अच्छा मेंटेन है, अच्छा, वो करेगी। डेट टाइम डेट स्टैम्प रखी है, हुई है उसने, डेट टाइम रखी हुई है। स्टैम्प है इसका। हम्म। बेसिकली अगर हम टाइम इसको स्टैम्प के खोलें तो ऊपर होता है वो, उसके साथ हर वो मेंटेन कर रहा था, और इसके साथ इसका एक अपना जो है ना रिवीजन नंबर होता है, और रिवीजन रिवीजन नंबर नंबर अच्छा, होता डेटाबेस है। में मेंटेन हो रहा होता है। वो सही लास्ट है। रिवीजन से अगला जो रिवीजन नंबर है वही उठा के वो माइग्रेट रन करती है। Yes. तो वैसे इसमें क्या मेरे ख्याल में जेंगो का जो है ना, जो इसका नेमिंग जो कन्वेंशन जेंगो यूज करता है, वो ज्यादा इजीली रीडेबल है, क्योंकि उसमें वो एक सीरियल नंबर होता है। अगर मतलब लेट्स से 1 2 3 4 इस तरह करके वो चल रहा होता है। आपको पता है कि अगर एक मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट वगैरह, अगर पीआरस वगैरह में कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहे हो, तो वो एक ही उसकी नंबर की 2 माइग्रेशंस आ रही हैं, या फिर मतलब आप इजीली उसमें उसको स्कैन कर सकते हैं। बट इसमें भी ना ऑप्शन होती इसमें है, भी आपने जब माइग्रेशन जनरेट कर रहे होते हैं ना, आप अगर उसको सिंपली खाली जनरेट का कह दोगे ना, तो वो ये रिवीजन नंबर के अगेंस्ट वो जनरेट करेगा। वो इस तरह ये जिस तरह रजी ने फाइल्स दिखा रहा है ना, इस तरह माइग्रेशन की फाइल का नेमिंग कन्वेंशन ऐसा नहीं होगा। अगर अच्छा। आप आगे उसको पैरामीटराइज करते हैं और उसको इटसेल्फ मेंशन करते हैं कि ये फाइल नेम होगा या ये इसका मैसेज होगा, तो वो फिर इसकी इस तरह की फाइल्स जनरेट करता है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है। Again, I think more अ, flexible than Django. जी, बिलाल भाई, मेरा यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर फॉर एग्जांपल आप डेवलपमेंट कर रहे हैं और आपके पास लाइक आप मल्टीपल चेंजेस कर रहे हैं, और आप एक एक सपोज एक मॉडल बना के आप माइग्रेशन रन कर देते हैं और एक माइग्रेट फाइल बन जाती है। उसके बाद आपको याद आता है कि आप एक कॉलम भूल गए हैं, और आप दोबारा एक कॉलम ऐड करके वो माइग्रेशंस रन करते हैं दोबारा, तो आपकी एक ही चेंज के लिए मल्टीपल माइग्रेशंस फाइल बन जाती हैं। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम माइग्रेशन फाइल्स मतलब पुरानी डिलीट करके मर्ज कर लें, या मर्ज करने की कोई ऐसी चीज है कि हम नॉर्मली माइग्रेशन मर्ज कर वैसे सकते वैसे माइग्रेशन का ना मकसद यही होता है कि आप उसके अंदर चेंज मेंटेन कर रहे होते हैं, ताकि हर लेवल के ऊपर आप वापस से आ सकें। बाकी माइग्रेशंस को मर्ज आप डेफिनेटली कर सकते हैं। एक जिसे कहते हैं ना जुगाड़, ये होती है कि आप क्या करेंगे, अपनी माइग्रेशन फाइल्स डिलीट करें, जो लास्ट माइग्रेशन जिसके ऊपर आप जाना चाहते हैं वहां पे जा वो उसका रिवीजन नंबर उठाएं, और आपके जो डेटाबेस में एम्बलिक के नाम से एक टेबल होता है, उसके अंदर सिंगल रो सिंगल कॉलम का टेबल होता है, उसमें जाके वो वैल्यू अपडेट कर दें, और उसके बाद दोबारा से माइग्रेशन रन करें, तो वो नई फाइल एक जनरेट करेगा, वो कंसोलिडेटेड फाइल होगी। लेकिन ये अच्छी अप्रोच नहीं होती, ये मतलब जुगाड़ है कि वर्स्ट केस में आपको इस तरह करना पड़ जाए। तो नॉर्मली आप अपनी ही मल्टीपल ही फाइल्स को मेंटेन कर रखना चाहते हैं,
ताकि वो एक एक चेंज आपके पास इंडिविजुअली पड़ा हो। लेकिन यार मैं अगर एक इसमें चीज है कि अगर आप लोकल डेवलपमेंट कर रहे हैं और आपने एक माइग्रेशन बना दी है और फिर आपने कोई फायर ऐड किया है तो फिर तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। हाँ वो अगर वो वाला हाँ, केस है कि मैं डिप्लॉय लोकल हो गई। लोकल तो वो हाँ टेस्टिंग के लिए तो बंदा करता ही रहता है बिल्कुल ना, वो तो बिल्कुल होता है। उसके बिल्कुल। लिए मैंने जुगाड़ आपको बता दिए। डिप्लॉय कर दिया तो आई थिंक इट्स बेटर कि आप एक अलग माइग्रेशन बना दें रादर देन पुरानी माइग्रेशन को छेड़ें। आई थिंक टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है। रिजवान के पार्ट पे चलते हैं जल्दी से। Okay, thank you. I'll start sharing my screen then. Okay, so those of you that were more observant during Raziullah Bhai's part would have noticed कि कुछ spoilers उन्होंने डाल दिए थे उसके अंदर कि मैं क्या करने वाला हूँ। So Django's sorry, Flask के पास it doesn't have a built-in ORM itself, so it usually requires you to import something like SQLAlchemy. And because SQLAlchemy is so prevalent and people use it so often, there is a library called Flask SQLAlchemy that makes it a bit easier to create databases using SQLAlchemy. मैं अभी okay, which I should take a pull from the project that Farhan Bhai started. Okay, nice. So now that I have this project, I can start importing the files I need to put into here. So the first file that I really need in order to create my database is a models.py file, right? This one actually doesn't have the, I don't think it has the file structure that Bilal Bhai made. So हाँ, I'll वो just एक्चुअली मुझे कोई राइट्स का इशू आ रहा था, मुझे पुश नहीं करने दे रहा कोड। okay, in that case, I'll just make the models.py here. So file structure को मैं इतना ध्यान नहीं देने वाला because honestly I don't know the file structure. I don't remember doesn't matter. Yeah. So for I'm going to create a models.py file, and I'm going to copy and paste these models that I already made right into here. What does this exactly do? It imports a library called Flask SQLAlchemy, which is a wrapper library for SQLAlchemy itself. And it gives us this way to create the database that is a lot more streamlined than the way Raziullah Bhai mentioned. In this method, all we have to do is create a DB variable, which is just the base variable that Raziullah Bhai was basically using in order to create his classes. And then we can use the classes that we want to create can inherit from one of the classes in that within that class in order to create the actual models. So we have 3 tables here. In order to show a many-to-many relationship as well as a many-to-one relationship. The many-to-many relationship is between the book and genre table here, which is these models are actually taken from the example project that we're working on with Django. And so this is very equivalent to the Django, to the models that we create in our Django project. So that could also be a point of comparison between the two. With the many-to-many relationship, what we need to do with Flask is create an association table that kind of joins the two. In Django, you don't need to create a many-to-many, you don't need to create an association table in order to resolve a many-to-many relationship, but in Flask, you have to do it explicitly. The way to do that is by creating a table, by creating a separate table, giving it whatever name you want. In this case, we've named it association, and the columns for that table will be named after the primary keys of the 2 tables that we are trying to join. In this case, the book and the genre tables. And within the 2 tables that we want to join, we'll have to resolve this relationship using a db.relationship function. And what this takes as a parameter is the class name. It should be, which is something to note, as well as a back reference. A back reference just means that within that the table that is supposed to be joined, it should essentially have a virtual column by this name. So what this is saying is that within the class, with the class combine, what this is saying is that
connect the book table with the genre table and create a virtual column within the genre table called book, which serves as a back reference to the book it is connected to. And since we've used back reference, we don't actually need to show this connection with the book class in the genre class itself, because back reference just kind of handles that for us. Another alternative to back reference would be back populates, which serves as something similar, which will show in a many-to-many relationship that we have here. With a many-to-many relationship, on the child part of the many-to-many relationship, or the many part of the many-to-many relationship, we want to create a column that has a foreign key attached to the that has a foreign key attached to, that has a foreign key that has a that has the ID, that has a primary key of the parent class. And again, it should be noted that the foreign key actually takes in the name of the table and not the name of the class in this instance. While we also want to show that this relationship exists using a db.relationship attribute. And in a many-to-many, in a one-to-one or a many-to-one relationship, we can also use back populates back populates as well. And when you use back populates, you also have to show the two attributes that are being connected. So in this case, what it's saying is that there is a relationship between the two author tables and the book table. And in this case, it's saying in the book table, populate the author attribute with the name, populate the author attribute with the name of the books, with the name of whatever books this author has made, essentially. And so, I think I didn't mention this before either. So we also have to create the other variables by ourselves. In order to create the other columns, we'll have to specify whatever type the columns need to have. So if it's an integer type, we can use db.integer. If it's a string type, we can use db.string. There are multiple different types that SQLAlchemy supports. This could also be somewhat limiting. So for instance, if you want to use something like a UUID, that is something you'll have to implement yourself because SQLAlchemy doesn't support a UUID type by itself. Django, on the other hand, does. There are certain libraries that you can use if you want more types for SQLAlchemy, but for the most part, just either make it yourself or somehow try to integrate some other library into your project. Now, the dunder repre function, what this does is it just says every time you want to represent this particular object, in order to make it look nice, just use these variables. So if I were to do something like print whatever author object this is referring to, it'll instead print out the last name and then the first name divided by separated by a comma, just to make it easier for us to visualize if you were to somehow show that on a terminal or something. Now, in order to create the actual database, we'll have to use a library called Flask migrate. And I think I have Flask migrate. No. Yeah, Flask migrate. I'll have to import it from here. Let's go copy this. Actually, it's the same interpreter for the other project, but it should be okay, I think.
Okay, so we have to use Flask migrate, and Flask migrate actually takes Flask SQLAlchemy as a dependency. So we'll also have to use Flask SQLAlchemy. And the way we do that is by using the DB object that we created in our models.py file. I think in a more professional way, like if you were to work on an actual large project, you would probably create this DB object in some other file and then import it from somewhere else. But in this case, we've just added the DB object into our models.py file. And then what we're going to do is we're going to take the config that Razi Bhai actually created earlier. It's basically the same thing. And then we can combine the app and the DB using db.init app. Now, after we do that, we can just set up the migration tool using migrate app DB. And this should actually just allow us to do migrations with this. I'll also just add in this because this was included in our actual thingy. So hopefully this should work. We have a shell. Oh. So I am in a virtual environment right now. And then what is the command for this? Oh yeah, I'm not sure if I have the libraries actually installed. So what? Why can I not see? You can just directly reinstall the dependencies. Because I'm not sure if that. Okay, Flask one. I'm not sure ये क्या हो रहा है. Okay, so I also need to install Flask SQLAlchemy. I think this is how you spell it. Check. Flask and just SQLAlchemy. Okay, I think it's correct. And now we can just Flask. Okay, yeah, we also need to install Flask migrate. Yeah, I think that's the name. Flask migrate, yeah. Okay, so now that we've installed the libraries that we need in order for this to work, we should just be able to go ahead and create our database, which should work with, I think I need to set the environment variables for this first. What is that? Environment variables? No, I don't have the. Actually, ऐसे ही कर लेता हूँ. Flask DB init. So this should create a migrations folder. Okay, yeah. So this created a folder which should contain all of our migrations for this project. So and अच्छा ये command वो है जो हम first time run करते हैं ना, right? Yeah, yeah.
Yeah, this should yeah. just create the folder in which all of our migrations should go into. And then we need to run Flask migrate, I think. Flask DB migrate. Yeah, sorry. Oh, okay, so as you can see, it recognized all the tables that it needs to create. And then now you can just run Flask DB upgrade. And that should, as long as all the tables are created correctly, just create a database. And it is here. Okay, so wait, let me see what the database looks like. Okay, so this is the actual database that we created just now. The tables are empty at the moment. Yeah, the tables are empty, but that's basically just how we can use SQLAlchemy to create the database in Flask. If we were to make any changes to the models, we could just run those migration steps again, and it should update the database accordingly. Now, if we wanted to actually add some data into the database, we'll probably have to do something like Flask. I'm gonna just open up a shell terminal for Flask here, and then I'm going to import. Okay, from models, import. So what's a good author? Many authors be a chat genre. Just to. Okay, so now that we have a genre object, we can do something like genre, and then and the name we can just use something like fantasy. And yeah, so that created a genre object, and now in order to save it to the database, we can do something like, oh, okay, I need to import something else from models, and that is from models import db. DB is used to add models to the database as well as create the classes for the models. So this is it's a pretty useful variable to keep. So from models import DB, I'm just going to do db.session.add, I think that's it. And I didn't save the object that I just created, so I'm going to do something. So I'm going to do it again, and I'm going to save it as a variable named fantasy or something. Okay. So now I'm going to do db.session.add fantasy, and then db.session.commit. And that should add the object into our database. Let's see if that worked. Okay, so now we can see that the object is now present in our database. If we wanted to create relationships between objects, we could do that by creating the object first, and then adding the other object by appending it, and then by creating the parent and child objects together separately, and then appending the child object to the appropriate variable in our parent object. So we would create an author object, and then we would do something like author.books.append whatever book we just created. I could do that right now if someone wants, but I think थोड़ा लंबा हो जाएगा. But if you want, I could do that as well. यार मेरे ख्याल से I think we should wrap this up. वैसे भी 1 minute रह गया. Need to start third meeting. So I think we can move it to the next session. Okay, so that's about it from on my end. If anyone has any questions. Oh, I think
awesome session. काफी चीजें नहीं पता चली Flask के बारे में, so thank you guys.